सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है गेंशिन इम्पैक्ट के Inactivity और एक serves न्यू no लाइव purpose स्ट्रीम में। whatsoever. चलो देखते हैं। मेरे को एक इवेंट कंप्लीट करना है, जो ये वाला। चलो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ अपन को ये करते करते तो अपन लोगों को बोले तो ये भी हो जाएगा। डेली क्वेस्ट, डेली इवेंट्स जितना प्राइमोस मिलने वाले वो भी हो जाएंगे। यप, एक सेकंड में बस ऑडियो चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके, तो ये इवेंट को ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, तो हम लोग को प्राइमस मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द ये पूरा इवेंट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। यार ये चेयर यार, क्या बताऊँ। ओके, मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है? लो आवाज़ भी थोड़ा कम करो। हाँ अभी बराबर है, गुड टू गो। ठीक है ठीक है, चलो इवेंट ऑन All करते the world holds dear is but a Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? ये ऑटो पे क्यों नहीं जाता है? I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Well, I'm afraid you have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Oh. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Xavier! Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontanalia Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, सुमेरु में था who शायद, went है ना? on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. भाई Ah, I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt, and the Lantern Rite in Lille. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year.
to commemorate the Lock Nights. People will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. That really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? हाँ वही तो ना. Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. Okay. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Huh. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Chiori. Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? She runs the clothes store in the country of Port of Fontaine. Theory Banquet. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the... Oh, Paimon remembers now! Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too! How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. भाई चलेंगे the cracks of masterpiece. Okay, ये इवेंट चालू हो गया. चलो देखते. Oh wow, भाई ये टाइम इतना अच्छा दिया यार. ओके, तो मैं लेट ऑन कर रहा हूँ बोल के पूरे इवेंट्स अनलॉक हो गए हैं. Space introducing academy. Get good. Okay, yo, well. कुल मिलाकर 4 है. 7 दिन बाकी, 7 दिन 9 घंटे. चलो पहले वाला देखते हैं. The arrival of. Okay. यहाँ पे भी है शायद. चलो ये देखते हैं पहले, फिर वो वाले में बढ़ते हैं. Great days, it's so open, famous. चलो हटाओ यार. ये क्या है? बिजनेस कार्ड. I see.
our interest has been piqued. ओके, कुछ तो हुआ। ये क्या? ओके, इवेंट के साथ साथ तुम्हें को ऑब्वियसली प्राइमस भी मिलेंगे और ये डिस्क टाइप कुछ मिलेगा। फिल्म फॉर फन। ओके, फिल्म फॉर फन। ये जितने मिलेंगे उतने अच्छे रहेंगे। चलो देखते हैं ये वाला। तो उसके अंदर भी वेरिएंट्स है, 4 वेरिएंट्स है और 4 देखना है। सारा में प्राइमस है। ओके, द पाथ ऑफ द सन, वेटिंग अंडर। ओके, देखते हैं भाई, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो देखते हैं। Enter the films environments them into a video. You should come to 5 minutes. Select the most suitable narrations according story. Once the positions and narrations, all shots are selected, you can start filming a video to result. Your video will be rated according to how those director requirements. Do your best to satisfy all the requirements and receive a higher rating to win rewards. Okay, and across is lost in classes connection. He looked up right. Face. के ये टाइम का एक टाइम का दोस्तों फिल्मिंग बना है ना। तो जहाँ तक मेरे को समझ नहीं आया है, ये जितना इसमें है ना, ये जितना पढ़ना है और उस हिसाब से अपन को स्टोरी बनाना है। चलो देखते हैं। नहीं, फ्रेम 1। So the environment that played by ये है क्या? हमने पोस्ट रिक्वायर फिल्म हाउ टू actor played by as seagrasses right questions. uh, Actress is this the one? Show how the actress Lynette
We like no. After enjoying the, it should be the time to prepare for. But it just like no. Please. Karo. I remember the path I took coming her time for afternoon tea. This all seem. There we go. This should seem. It's all seem underwater. Seem highlight. Highlight करा मैंने. I know. Follow the sun rays. Okay. Fair enough. भाई ये तो बहुत बढ़िया है. ये बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया लगा मेरे को. ये तो कर दिया मैंने. कितने पॉइंट्स मिले उस हिसाब से परफॉर्मेंस मालूम होगा ना मेरा. ये इजी है. समझ नहीं आ गया. तुम लोग को भी आ गया होगा. अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वाले में तुम्हारे को बता दूंगा. ठीक भाई ये तो पर काफी लंबा है. कहाँ है? मैं वही बोल रहा हूँ. दूर जा रहा हूँ मैं. करा ही नहीं मैं. अबे टूट दबा. और नवा इवेंट भी आएंगे शायद से क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए ना इसको. देखो 1 तारीख से चालू हो रहा है. तो ये वाला इन तो 1 तारीख से चालू होएगा. और ये इवेंट पैकअप हो जाएगा. तो उसके पहले ही कर लो भाई. ठीक है. another smelting. चलो देखते हैं. हाईलाइट द impressively sunny weather. ओके सबसे ज़्यादा सनी वेदर. ठीक है. फिल्म द एक्ट्रेस नाविया विद इन waiting and show the actress Navia express. Okay, Navia. I think this is good. Film the scene of the two actress meeting. Okay. Show the expression of the actress Paimon as she withers in the. well, अच्छा दिख रहा है. Where should we go? It's way too sunny here.
I went to eat hot donuts. And I go. Film the actress Navia as she holds the umbrella and sunlight and lenses. Okay. ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है, अच्छा दिख रहा है. Come on, let's go to the cafe. Yeah, it's just about to wilt in. Is he? Don't worry, I already prepared. Come, stand under my. ओके तो तुम लोग को बताना भूल गया, ये इस हिसाब से तुम लोग का जैसा बना है उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे. ये वाले में मेरे को पॉइंट्स नहीं मिले, देखो इसमें 30 पॉइंट्स मिले मेरे को. व्हाट द हेक. 2 स्टार एक बार फिर से. अब मेरे को मालूम है ना, बस ये वाले में मैं गड़बड़ कर दिया. चलो ये देखेंगे. सनी एक्सप्रेशन सिखाओ बोल रहा था ना. 20 इधर तो लगता ठीक था. ओके 30 पॉइंट्स. इट्स वे टू सनी हियर. देयर वी गो. ऐसे ही है यार, बहुत इजी है. बहुत सही है. Next location, where it is. एक सेकेंड भाई, ये क्या है? ये सब तो ठीक. यहाँ पे दिखाओ. नेक्स्ट लोकेशन वही था. यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है. ठीक है चलो नेक्स्ट, इसके बाद यही जाएगा. चलो. यार ये बहुत टाइम लेता है यार, बस एक ही प्रॉब्लम है. एक अच्छा फिल्म बना दो पूरा मिलके. देखो तुम्हारे को वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हारे को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, या नहीं तो बस तुम लोग का डायरेक्ट इधर इधर रूल्स रहते. फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 5 तक. ठीक है तो तुम लोग उस हिसाब से उस हिसाब से पढ़ के कर लेना. देखो फिल्म द कस्टमर sizing of the sample on the table. Okay, film the customer frequency between दिखाएं. Reveal the identity of the mysterious Yoimiya and show of them. Okay, ये ठीक है.
तो ठीक है, ये वाला ठीक है। Seller UIMI displays the brand product to customer. ओके, ये वाला बढ़िया दिख रहा है। ओके, आई थिंक दिस शुड बी द enough. We need to order more. They have been our product according to the years of. ओके, ये ठीक है मेरे को। Show that the sales was successful. Mm, framing the customers action, ये ठीक दिख रहा है मेरे को। और इसका नाउ से since you came to fountain you must over. Do we have a deal? Yes. देखेंगे, इजी है इवेंट पर पॉइंट्स। ओ यार, एक 0 पॉइंट मिला। ठीक है, इसमें ये पॉइंट 10 पॉइंट यार। ओके ठीक है, लास्ट वाला बढ़िया है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बस थोड़ा बहुत समझ में आ गया मुझे। ठीक है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला देखते हैं, हो जाएगा शायद। मेरे को ज़्यादा कर लग रहा है क्योंकि 10 पॉइंट्स, क्या बात कर रहे हो यार। चलो ये दो पर भाई, क्या बात कर रहे हो यार। ये चलो ये देखते हैं एक बार, हो जाएगा शायद, ये टाइम पूरा हो जाएगा। 20 पॉइंट्स ठीक है। पहले वाला बढ़िया था। चलो ठीक है, पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। ठीक है, और कहाँ पे है नेक्स्ट? कहाँ पे? यहाँ पे है ना। चलो बाहर आते हैं। और बताओ, तुम लोग का इवेंट कर दिए हो क्या नहीं? पहले वाले में मेरे को कितना मिला वो देखना है। ये वाले में यार 1 बज गया। ठीक है, ये देखते हैं जो बच गए ना भाई, वो देखेंगे अपन लोग आखिरी में। पहले जितना हो सके कवर अप कर लेंगे। ओके, present the environment and character एक ही साथ कैसा बताऊँ? ये है क्या? highlight the actress who's- okay, I think there was a type in the report. If the shot is taken, should I buy a better lens after I get paid? तो ये देखते हैं। Film the actress
ओके, SOPN एरिया सेटअप कैमरा। Show how the actress on the has picture capturing the photo of the uh, ये बढ़िया है, ये करेक्ट है क्या? Be able to capture the entire video of this. It's basic trick of the ये देखेंगे। ये तो 20 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स होना चाहिए था यार इसमें, 50 पॉइंट्स। डायलॉग 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 के ऊपर है भाई। आधा अच्छा हो गया सर, आधा अच्छा है। ये लेंगे ये, चलो ठीक है। थोड़ा बदलाव करेंगे इसमें, उस तो भी एक रैंडम लगा रहा हूँ, क्या मालूम है। There we go. ये तीनों में गड़बड़ है। डायलॉग भी रहता है ना। चलो ये तो कंफर्म हो गया, और इसमें अगर ये करे तो पूरे कंफर्म देख ले रहा हूँ, पर हो गया तो अच्छा है। फ्रेम 1, फ्रेम 2 पर हुआ है। हाँ, पहले ही बराबर लिया था, बस डायलॉग में गड़बड़, चेंजेस करना पड़ेगा। चलो हो जाएगा वो तो। ठीक है। बस ठीक है। और ये वाला, ये वाला, ये वाला है। Yeah, we should be able to capture the entire वही बोल रहा हूँ ना, डायलॉग में भी रहेगा। आई थिंक दे भी बाई एबल। हाँ ओके, नवा लेंस बाई करने का बोल, 20 पॉइंट्स का 20 पॉइंट्स वो वाला ही है। ओह वाओ, पर अटेम्प्ट्स करना है। ये है अभी हो जाना चाहिए शायद से। मैं पूरे चेंजेस तो कर दिया भाई।
ये चलो देखते हैं। फ्रेम टू 40 पॉइंट्स कैसा दे रहा है? हाईलाइट द एक्ट्रेस प्लीज। ये एक नहीं, ये दो नहीं हुए, दो नहीं हुए मतलब दो में ना थोड़ा सा चेंजेस करना। ये और नेक्स्ट वाला क्या है? तो वहाँ पे जाते हैं, देखेंगे। और भाई लोग, आप लोगों ने भी ये इवेंट कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कभी नहीं आया ऐसा इवेंट तो। Who is क्या मैं पूरे अनलॉक कर दूं तो अच्छा रहेगा ना? फिर अपन लोग का डायरेक्ट वो देखो नजीक नजीक नजीक। पूरे अनलॉक कर लो पहले, एक सेकेंड, पूरे अनलॉक कर लो पहले, फिर इसके बाद है ना पूरे इवेंट आप तुम लोग का फटाफट फटाफट कर सकते हो। तो वही बोला, खाली ये बातचीत एक बार बता, बंद कर दो, बंद करके बंद कर दो, आगे बढ़ाओ यार। ओके दोस्तों, एक सेकंड, एक दो मिनट रुक जाओ, ये बस कॉन्वर्सेशन होते कि अपन लोग इवेंट करेंगे क्या? ये बहुत लंबा खींचते हैं यार इन लोग। ओके फाइनली बातचीत हो गई है आई थिंक। अरे भाई I need to One with nature. ओके ये तो बैटल है ना? Wait, ठीक है, अरे वहाँ पे
ये नको, ये रहा ना, मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं पहले, वो करके फिर ये वाला देखेंगे। हाँ ये थोड़ा बहुत वैसी बैटल टेक्निक है, बैटल टाइप है, तो हो जाएगा, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो पढ़ते हैं फिर। एक सेकेंड, हाँ टूथ अलग रखा मैं। For 12 seconds after using unleash and hydro shock wave centered around your actor every 4 seconds, it dealt hydro damage. All gyro damage increases by 6%. Okay. चलो हीलर ले ही लेता हूँ। ओपोनेंट्स को हो जाएगा शायद इसमें, हाँ हो जाएगा भाई, धड़ धड़ के पीटेंगे अभी तो। ऐसे वाले इवेंट मेरे को बहुत पसंद आते हैं, वो वाला इंटरेस्टिंग था, पर ऐसे वाले में मार पाड़ भेड़ पड़ मार बहुत पसंद आता है यार। दो यार ऐसे Illusion shattered. Rebuild. Time to go. Wind knows me. There is no escape. Sakura swirl. Let's move out. Allow me. Shine down. Inazuma shines eternal. Hold the line. Into the wind. Wind and flow. अबे टी कहाँ गया? There is no escape. Embrace the ice. So rude. One with nature. Illusion shattered. Now you shall perish. अब स्मूथ चल रहा है। Flight. Rest and rebuild. Clouds high. The birds fall. Kamisato out. Sumetsu. Into the wind. Torn to oblivion. हो गया शायद, देखेंगे। ओके, नॉर्मल ओपोनेंट डिफीटेड 96, एलिमेंट ओपोनेंट डिफीटेड 20, स्कोर ऑफ 44,562। ठीक है, मिले क्या? हाँ ठीक है, मिलने से मतलब है भाई। तो इसका क्या है? एक सेकेंड, बैक करो ना, बैक नहीं कर सकते यार। इतना मारने को देर कहीं को, एक सेकेंड भाई भाई भाई, इतना मारने को इतना देर कहीं को हो रहा है। मैं बोलता हूँ इसमें ना, मैं ना सिंपल वाला नहीं लगा, स्टैंडर्ड रखा, और कॉम्प्लेक्स रखा ना और टफ होएगा। तो तुम लोग जितना टफ रखेंगे उस हिसाब से ओपोनेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। तो मैं मिडिल रखा, ज़्यादा हाई नको ज़्यादा लो नको। तो पहले वाले में गोल्ड मिला। ओके, इस ये नहीं, ओपोनेंट डिटेल्स। ओके, तो तुम्हारे को इसमें रोबोटिक्स पूरे मिलेंगे, और ये वाला मिलेगा, और ये तो खिलीचर है, खिलीचर
So after using a English shockwave at the डीलिंग टीम। ओके, पहले वाले में हाइड्रो था। हाइड्रो का अपने आजू बाजू पूरा अटैक्स होते थे। हाइड्रो के थोड़ा डैमेज देता था, हाइड्रो का एक्स्ट्रा बोनस डैमेज देता था। और ये टाइम तुम्हारा नॉर्मल अटैक्स है ना, डीलिंग टर्न्स डैमेज टू नियर बाई ओपोनेंट्स। वन सच शॉकवेव कैन बी रिलीज एवरी 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो मैं एक हीलिंग तो हीलर तो रख देता हूँ, एक बो कैरेक्टर रख देता हूँ। एक सेकंड भाई, काजुआ योइमिया इसको आखिरी में रखते हैं। ठीक है, मैं हीलर क्यों रखा हूँ, कहीं धड़पड़ में मर ना जाए बंदे हम। और लेकिन योइमिया है नहीं वैसा बाय द वे, तो यूज़ करने में मज़ा आएगा। Fire hazard! Shine down! Inazuma shines eternal! That hurts! ओके भाई, ये वाला अलग है। There's no escape! On to oblivion! Let's move out. Time for a light show. Into the wind! Here comes the fireworks. इसमें आवाज़ बहुत अलग हो जाती है यार। Shine down! पूरा फिल्मिंग 90s के टाइम की फिल्मिंग्स रहते हैं ना, वैसा हो जाती है पूरी आवाज़। The fuse is lit. Tip, flies high. The birds fall into the wind. There is no escape. Now you shall perish. तो मैं जब वो फिल्मिंग का मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, वो जब करता हूँ ना तो डैमेज ज़्यादा होता है। Fire hazard. अरे यार बटन क्लिक करने नहीं दे रहा यार। ओके, ये टाइम थोड़ा टफ था। क्या होता है प्रॉब्लम, मैं बोलूँ दोस्तों, ये जब सिंगल वाले आते हैं ना एनिमीज, तब उसके पास जाके मारना ज़रा टफ हो जाता है। बोले तो अब ये लोकेशन में हमारा उसके ऑपोजिट, बराबर ऑपोजिट लोकेशन में रहता है वो, है ना, समझ रहे हो ना। तो एकदम ऑपोजिट लोकेशन में रहता है, तो उसकी वजह से है ना, उसके पास ट्रैवल करने के उतना है ना टाइम में थोड़ा टाइम खप जाता है। सेकंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे मैं बाहर कैसे भर काई को निकला है बाय द वे, अंदर ही रहना। ओके, तो अपन को सिल्वर तो मिला, चलो ठीक है। इजी में भी कर सकते हो, पर देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। तुम for 12 seconds after using the elemental burst, damage of all characters in the party is increases by 80%. When character have less than 70% elemental energy, their energy recharge is increases by 50%. Self explanatory है, तो देखेंगे। चलो ये टाइम क्या करता हूँ मैं, चलो पूरे अलग अलग एलिमेंट यूज करेंगे अपन ये टाइम। चलो देखते हैं।
तो तुम लोग का है ना एलिमेंटर रिचार्ज कम रहता है ना, देखो। तो पार्टी इज कैरेक्टर इन द पार्टी इज इंक्रीजेस बाय 80% व्हेन कैरेक्टर हैज़ लेस देन 70% एलिमेंटर एनर्जी। तो एलिमेंटर एनर्जी 70% कम रहे तो देयर एनर्जी रिचार्ज इज इंक्रीज जस्ट बाई 50%। तो तुम्हारा एनर्जी रिचार्ज 50% इंक्रीज हो जाता है। तो चलो देखते हैं। ये वाला वाटर है Shine तो down. इसमें I'll uproot you. अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ। Adorn my night. One with nature. There is no escape. Now you shall perish. ये देखो ये बोल रहा हूँ। And shroud. Illusion shattered. Get them! Let's nip that in the bud. Inazuma shines eternal. Can't see. I hear everything. Shine down. One with nature. Adorn my night. The wind knows me. There is no escape. One with the force. Let's nip that in the bud. Nice and spicy! Clouds high. The birds fall into the wind. You're toast! Illusion shattered. Torn to oblivion. तुम लोग का बराबर मारना उसको तो बराबर बढ़िया रहता Shine है। down. One with nature. ये टाइम अच्छा हुआ रहेगा। क्योंकि तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, पहले वाले में ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हुआ था, पर ये टाइम मैंने क्या करा मालूम है, एलिमेंट रिएक्शन है ना उसके ऊपर फोकस ज़्यादा दिया। अरे मैं एग्जिट क्यों कर देता हूँ। तो मैंने ये टाइम एलिमेंटर रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। जैसा मैंने ज़्यांगलिंग को यूज़ कर कर फिर रेडन को यूज़ करा तो क्या होता है, इलेक्ट्रो रिचार्ज हो जाता है ना। तो वो बहुत बढ़िया रहता है यूरू। चलो कोई नहीं, एक वाले में नहीं मिला था तो ओके। फॉर 12 seconds आफ्टर यूजिंग व्हेन अ कैरेक्टर ऑब्टेन एन एलिमेंटल शील्ड। ओके ये वाले में नाविया यूज़ करेंगे अपन लोग। ट्रीटेड बाय द क्रिस्टलाइज रिएक्शन ऑल जियो डैमेज डील्स बाय कैरेक्टर इज in the party will be increases by 30%। ओके क्या है ओके। तो तुम लोग जब शील्ड एक्वाइप करेंगे तो तुम्हारा डैमेज इंक्रीज हो जाएगा बाय 30%। दिस इफेक्ट लास्ट फॉर 6 seconds सॉरी एंड मे स्टक अप टू दी 6 times। ओके 6 टाइम तक तुम लोग एक्वाइप कर सकते हो उसको। तो ये टाइम जियो है और ओपोनेंट्स कौन है वैसे, तो लल्लू पंजू है। तो इसमें तो देखो तुम्हारे को फायर कैरेक्टर इलेक्ट्रो कैरेक्टर ज़रूरी है। और ये क्या है, हाइड्रोमिकी बोरा, ये कभी नहीं मिला मेरे को। ठीक है चलो देखते हैं। इसको आखिरी में रखते हैं। इग्नारिना को ये वाले लिख के ये वाले अच्छे रहेगा। तो चलो देखते हैं। मैं नाविया बहुत कम यूज़ करा था, खाली ट्रायल में देखा था।
ओ ये इसमें बहुत अलग है। ओ भाई बढ़िया है यार, नाविया कैरेक्टर अच्छी है। क्या बेकार किस्मत है यार। अबे जंगली बोली हो यार। अबे एक गलत बटन क्लिक कर रहा हूँ यार, इसके लिए माइनस कटेगा। Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. Fire! ये बढ़िया है यार फायर का। Lola, get them! You're toast! Torn to oblivion. Feeling lucky? This one's got your name on it. Fire! Well, with rocks. At the frying pan, into the fire. Shine down. लो हो गया, वो हो गया। ये थैंक। हाँ देखो अभी अभी बराबर क्लिक करूंगा। बोला एक बार ट्राई करूँगा, क्या बोलते हो? एक बार ट्राई करता हूँ। तो इसमें आफ्टर यूजिंग यालन लेंगे इस पर फायरिंग रिचार्ज। चलो ठीक है, ये टाइम ड्राई रहेंगे, बोले तो ड्राई मतलब हाइड्रो यूज ही नहीं करेंगे। क्या बोलते हो? जियो पायरो और इलेक्ट्रो यूज़ करेंगे और एनिमता एज वेल है। Time for a light show. There is no escape. Observe. Strike is one. As one with wind and cloud. Shine down. Now you shall perish. Observe. Your grand finale. Adorn my night. Torn to oblivion. Observe. Break a leg. Here comes the fireworks. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Time for a light show. Shine down. And step. Strike is one. Clouds high. The birds fall. Observe. One with nature. Your grand finale. Fire hazard. Now you shall perish. There is no escape.
ही गया। चलो कोई नहीं। ओके भाई, ये इवेंट कितना लंबा है यार। ओके, तुम्हारे को स्वॉर्ड भी मिलेगा। एक काफी बढ़िया इवेंट है यार ये। और क्या मिलेगा इवेंट शॉप में से? ओके, तो तुम्हारे को ये मटेरियल्स मिलेंगे। चलो ये तो क्लेम करेंगे यार। क्या हुआ? ओके, और कंटिन्यूशन है इसका। ओके गॉट इट। और ये वाला पूरे प्राइमो से मिल रहा है यार, बड़े बढ़िया। ये वाला हो गया ना? यही वाला कर रहा था मैं। हाँ, यही वाला कर रहा था मैं। चलो ये पैंडा का भी कर सकते हैं। ये देख करके फिर वो देखेंगे क्या है। मैंने तो बोला बहुत क्रॉस कर लिया मैंने। Time to go. ये तो अंदर लेके जा रहे हैं यार। करना है पर वाला। पहुंच पाएगा? ओके, गेम डिटेल्स। ओके, ये वो ओ या ये बहुत अच्छा रहता है यार, बहुत पसंद है। मैच मेकिंग करके खेल सकते हो दोस्तों के साथ, कोई अननोन प्लेयर। पर है क्या ये? क्या हुआ? मैं कैरेक्टर स्विच करने। ओके, ये लेवल्स के टाइप में है। तुम लोग को इतने सारे में से रैंडम कौन सा भी एक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक देखेंगे, एक खेलूंगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और समझाऊंगा ना, समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तुम्हारे को गोल करना है। ओह गॉड इट। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? Time to go.
ओके वो एक बड़ा वाला है वो करना भाई 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 ओ भाई भैया तो बहुत गंदा गेम है अबे साला चोरी नको करो नल्लो ये देखो ना भाई 60 क्या बात है ये तो 800 मिले वो शील्ड के वो बड़े वाले है ना दो वो एक दो और डाल देता ना बढ़िया मजा आ जाता था चलो देखते हैं और क्या है ये रुक 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 रुक। ओके ये रैंकिंग सिस्टम है ओके तो देखो दोस्तों 3500 4000 4500 5000 तक तो 5000 तक तुम लोग का पॉइंट्स कलेक्ट करते रहो जैसा गेम खेलते रहेंगे तो तुम लोग को वैसे मिल जाएंगे बहुत अच्छा है ये इवेंट बहुत बहुत बढ़िया है ये वाला 5000 तक है देखो तुम लोग कितना भी कर सकते हो तो एक दो गेम खेल के देखेंगे वो तो अपन लोग दूसरे कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना वैसे तो ये टाइम में काजुका सेलेक्ट वो स्विच कर रहा हूँ तो तब हो रहा नहीं था क्यों पता नहीं हाँ अभी हो रहा है ना क्या मालूम पता नहीं तब कहीं को नहीं हो रहा था रेडन लेंगे रेडन के पाव बड़े हैं ना तो भागेंगे जल्दी इसमें बड़े पाव वाले लेंगे तो क्या मालूम अच्छा रहेगा ओके ये टाइम बॉर्डरिंग है अरे यार ये बैलेंस नहीं होता यार यार नहीं यार चलो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो दो ही बार
और बढ़ते रहेगा ये तो शायद से ना। हाँ, ये तुम लोग को 5000 तक करना पड़ेगा। चलो एक लास्ट मैच खेलेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ और। वो बचा कुछ पहले के इवेंट है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, रेड में मैं जितने डालूंगा उतने होएंगे मेरे। अब समझा मैं। वो व्हाट द हेक। ठीक है, तो मेरा टारगेटेड जोन है रेड। जब से मैं दूसरी दूसरी जगह डाल दे रहा हूँ, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने। टारगेटेड है मेरा रेड, तो रेड में देखेंगे ये टाइम। देखो ये रेड है ना, ये रेड साइड, ये साइड में एयर को मारना है। रेड मोस्ट प्रोबेबली आगे होगा ना। हाँ भाई, रेड पीछे ही है ना। अरे यार, लेने नहीं दे रहे यार ये लोगों ने। अब बढ़िया हो रहा है ना। वही यार, पढ़ा नहीं था मैं, देखा नहीं था। ये छोड़ो यार, ये आओ। ये तुम लोग बड़े वाले डाले ना, बहुत बढ़िया रहेगा। चल भाई, चल चल चल। ओ ये टाइम बढ़िया हुआ ना भाई। 51, क्या बात बोल रहा हूँ ना यार। यार हल्के में रखो लिया करो भाई को, क्या बोलता हूँ। देखो यार, 1300 हुआ यार। Melusines are beautiful creatures. अरे न्यूलेट, शुभ बढ़ जा मेरे भाई। सॉरी। क्लेम कर लेता हूँ हाथी हाथ में, फिर भूल जा। हुआ क्या क्लिक? है ना। भाई इतने खेला मैं, इतने प्राइमोस आए समझा। देखा तो 4 प्राइमोस है, एक 4 विशेष कर दूंगा। विश करने को मन कर रहा है, पर एक भी गलती से विश कर दिया और आ गई ना पिया भाई। नहीं बोल सकता। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Unable to do in co-op mode? कौन बना co-op mode में? निकल जा भाई।
All lift is running. लिफ्ट आएंगी क्या? अरे यार, अब नीचे जाना है, मेरे को ऊपर जाना है, कुछ पता नहीं। आ गया मैं अब। ओह, न्यू कैरेक्टर, नाम नहीं बनूं मैं। Miss Chiori? चियोरी Your talk with the investor sure went fast. दिखी और दिख रही। The aqua bus hasn't even आँखों arrived देखो ना yet. भाई इसकी। Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. ये वाली Likewise! We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. Ugh. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. तो काफ़ी समझदार बात कर रही है कि जो फोकस हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या होगा। ओह, आया का न्यू ले ये Really? Then where do you Mia? live? We Malazines live in Mercy Village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. अरे उसका नाम कैसा भूल गया? We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. आया तो अरे हाँ you've आया का आया arrived. तो But I haven't even कैसा finished भूल गया chatting यार with इसका Evil नाम? yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the Court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say ओके goodbye. इनोजुमा की है। Thank you for extending the invitation, पहले कभी Mr. नहीं मिली। Xavier.
I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. Ah, it's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. About that, I mean, how was I second, supposed to dosto. contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already! My, what a coincidence! What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. यार ये इंग्लिश बातों में फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, दिखावटी बोलते हैं ना, तो अपने इसमें बोलते हैं हाँ चल रहे भाई आपको ना को सिखा चल लेके जा यार ऐसा Wow, the buildings in Fontaine are so फर्क आ tall. जाता है. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? काश मेरे पास उसके कपड़े होते थे, कम इसे ट्राई का तो मे बी वही कपड़े पहन के इधर आता था फाउंटेन में. मतलब स्पेशली वो पसंद नहीं आया मेरे को कपड़े, ये वाले अच्छे लगे मेरे को. तुम चले ना तो ध्यान से सुनना, आवाज आती है देखो. ये दो नीचे के दो है ना बेल्स, उसके वजह से आवाज आती है. Yep. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew, a lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Ah, well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem?
I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of Mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough Mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Me too! Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Ew. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that! Alright, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Devat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. So, all that's left for us to find is a director? Oh, me! I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director.
Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's hydro archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the hydro archon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontinalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontinalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontinalia mousse! But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontinalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Well, what could that be? Your words of praise. Your words of praise. Whoa. हमारी बातों से उसे समझाना है कि इतना सारा काम करो। क्या बात है? कहाँ था वो डिश? चलो ये कर लेंगे। And यहाँ पे वो एक बार कर लेता हूँ। मेरे इसमें
कर गया। मटेरियल्स मिल गए। क्या है? एक सेकेंड रुको दोस्तों, मैं एक वेपन देख 5 स्टार का वेपन है इसको अवेलेबल। ये वाला वेपन बोल रहा था मैं। देखो ये वाला बेसिक अटैक Let's move out. देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है कमी। एक बार डेली कमीशन आगे बढ़। Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing. Ad Astra. और यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़े मेरे को आर्टिफैक्ट्स पूरे है ना इसे डाल देना, डिच कर देना है तो आर्टिफैक्ट्स मैं कम कर सकूँ। ये मेरे को देख सकते। ये करना है। यहाँ पे हाँ, तो एक मैं इसमें क्यों अपग्रेड कर दे रहा हूँ ताकि है ना क्वांटिटी कम हो जाए। पूरा
ये लेवल 3 का है ना, तो छोटे छोटे वाले लेवल ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, मैंने कंफर्म भाई, पूरे ले लो। देखो कम हुआ है ना आर्टिफिक्स। ये कर देता हूँ ना।
ओके ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को कहीं तो भी जाना है, इसके लिए अभी लाइव स्ट्रीम ऑफ करना पड़ेगा। तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे जो भी है ये, और या कोई इवेंट भी ख़त्म कर देंगे अपन लोग, कल पूरा कर देंगे, ठीक है। प्लेन कर दूँ। तो आप सब लोग उनसे विदा लेते हुए